really trying to get my papers. हेलो गाइस मेरा नाम है आयुष और गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं न्यू वाईटी स्टूडियो। वो भी बहुत ही कम से कम रुपयों में बनाने वाले हैं वाईटी स्टूडियो। और हर नए चैनल के लिए एक वाईटी स्टूडियो ज़रूरी है, तो आज हम बनाने वाले वाईटी स्टूडियो भी बहुत ही देसी तरीके से, अपने तरीके से, और बनाएंगे हम बांस की मदद से वाईटी स्टूडियो। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बनाते हैं वाईटी स्टूडियो। पर गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और वाईटी स्टूडियो नहीं हो तो आप इस वीडियो को देखकर बना सकते हो वाईटी स्टूडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बनाते हैं वाईटी स्टूडियो और बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलो गाइस बनाते हैं वाईटी स्टूडियो इस बांस की मदद से और आपको दिखाते हैं स्पीड में। I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers.
फाइनली गाइज हमारा YT स्टूडियो बनकर रेडी हो गया। और गाइज जितना हम इसे आसान समझ रहे थे बनाना, ये उतना आसान नहीं था। मुझे 3 दिन लग गए इसे बनाने में। फर्स्ट डे तो हमने बांस को काटा पेड़ से, और उसके बाद घर पे फिर बांस को एकदम सुतिया, मतलब एकदम सही से काट पीट के रखा। और फिर तीसरे दिन घर बनाने लग गए। और गाइज फाइनली जब घर बनकर रेडी होने वाला ही था हमारा स्टूडियो, तुरंत ही आंधी आ गई थी जिससे स्टूडियो पलट गया था, इसीलिए उसका छत ज़्यादा सही नहीं बन पाया। पर गाइज जैसा भी है हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है और हम उसमें सुधार करेंगे। और गाइज आप बताना कमेंट में कि आपको ये YT स्टूडियो कैसा लगा। तो चलो आपको हम YT स्टूडियो का इंटीरियर देते हैं और पूरा उसे दिखाते हैं कि वो कैसा है, और आप भी बता देना कैसा है। तो चलो दिखाते हैं। Another day, another dollar living in the bay.